he will only be playing 3 test matches. 20 to 25 is the first test. Then there is a 7-day gap. Do you think Bumrah will not play the Lord's Test match? There is enough gap. First two he should definitely play. Statistics show that he is God, but end of the day he is human, right? India should be an attacking team. वो कौन से 3 टेस्ट मैच खेलेंगे? अब मुझे नहीं लगता उनका करियर लंबा चलेगा. I also think Mumbai Indians should let him go. Jasprit One Bumrah. of the best. One of the greatest best. to ever play. Absolutely, and I think इस Yeah. वीडियोस में अगर इस वीडियो पे अगर हमें व्यूज चाहिए तो I think one of us should just go ahead and say कि I don't think Bumrah is going to play, and then we will have views because लोगों ये को मैं गाली देने प्रीव्यू के में लिए डाल रहा हूँ ये वीडियो खोला है। लोगों को गाली देने के लिए तो वीडियो खोलना ही पड़ेगा. तो ये मैं- फिर हमारे वीडियो पे No, व्यूज आ so जाएंगे. it's like this. If you're seeing this, Bumrah is not playing well. ये मैं He clickbait probably के लिए- sucks. clickbait के लिए मैं He ये probably last का sucks. section काटने वाला हूँ. I don't think जसप्रीत बुमराह इस टीम में जगह बना पाएंगे. I think हमारे पास much better bowlers हैं like ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा. उमेश यादव. Mohit मुझे Sharma. लगता है Mohit Sharma. मुझे लगता है बुमराह को अपने मौके के लिए वेट करना पड़ेगा. अभी हमारे पास ज्यादा बड़े बॉलर्स हैं. अभी एरन बुमराह फिंच को का खिलाना ही पड़ेगा. बुमराह का बहुत अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है. मुझे नहीं लगता वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्सेसफुल हो सकते हैं. अब मुझे नहीं लगता उनका करियर लंबा चलेगा. आई ऑल्सो थिंक मुंबई इंडियंस शुड लेट हिम गो. सही बात है. What is a Yorker in front of a slower ball? दोनों डाल देता है वो. But jokes apart, 100% from me. Jasprit 100% Bumrah from me. featuring in the first test, and yeah, as I'm not shocked that 100% from both of you also. But we have read this. Bumrah has conveyed this to the BCCI and the coaching staff that he will only be playing 3 test matches. So my question to both of you here would be, वो खेलेंगे Which 100%. 3 test matches? ये तो है ही, बट आपके हिसाब से वो कौन से 3 टेस्ट मैच खेलेंगे? और ताकि मेरा आंसर कॉपीड नहीं लगे, मैं अपना पहले ही बता देता हूँ. मुझे लगता है वो 1, 3 and 5 खेलेंगे ऑड नंबर्स. 1-3. मेरे हिसाब से फर्स्ट 3 टेस्ट मैचेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. अगर पहले 3 जीत लिए तो अगले 2 खेलने की जरूरत भी नहीं है. एंड आई थिंक इंडिया शुड बी अटैकिंग टीम और उनको यही मेंटालिटी रखनी चाहिए. नो सेफ प्लेस. दे शुड प्ले हिम इन द फर्स्ट 3 गेम्स, विन द फर्स्ट 3 एंड देन ही कैन रेस्ट पीसफुली. Rest peacefully. Okay. भाई दो प्लेयर को रजत इस एक ही वीडियो में रोहित शर्मा और बुमराह दो को legend तो को। खत्म ही कर चुके हैं. तो मुझे लगता है जब तक ये वीडियो पूरी होगी हमारी स्क्वाड आधी हो चुकी होगी. all our squad, whole of our squad will be no more. बट रजत, मैं तुमसे, जब तुमने ये पॉइंट रखा है, मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा कि आई थिंक द होल रीजन कि बुमराह 5 टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते हैं इज टू मैनेज हिज वर्कलोड. Yep. एंड वो ऑलरेडी एक 2-2.5 महीने लॉन्ग सीजन ऑफ आईपीएल एंड बिफोर दैट चैंपियंस ट्रॉफी खेल कर आ रहे हैं. तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि 3 टेस्ट मैच लगातार ऑन द ट्रॉट जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते दिख रहे मुझे. मैं आपकी बात समझ रहा हूँ. आपका कहना मानना यह है कि 3 टेस्ट मैच खेलो, गो ऑल आउट, उनको पहले ही 3 टेस्ट मैच में हरा दो, ताकि अगर वो लास्ट के 2 टेस्ट मैच जीतते भी हैं, ये जो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी है ये हमारे नाम ही रहेगी. मगर मैं ऐसा होता नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो वर्कलोड मैनेजमेंट सही से हो पाएगा फिर. क्योंकि अगर 3 टेस्ट मैच लगातार इंडिया खेले, और हम तीनों ये जानते हैं, अगर कोई डिसएग्री करे तो बोलिएगा, बट बुमराह ही मेजॉरिटी बॉलिंग करने वाले हैं इंडिया के लिए. जितने भी मैच वो खेले, 3, 2 या 1, उसमें अगर बुमराह लगातार 3 टेस्ट मैच खेले तो वो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा. इसलिए 1-3-5 मेरे लिए कुछ ज्यादा feasible लगता है. उसी के अंदर आई एम थिंकिंग, मैं इसी में यही चाहता हूँ. एंड आई वाज गोइंग टू मेक माय प्लेइंग 11 बेस्ड ऑन दैट, वेयर सीमर्स थोड़ी क्वांटिटी में ज्यादा हों, so that they can pick up when Jasprit Bumrah starts feeling a little low, like not like how it was in Australia, where he had to bowl over the top, like over the numbers of overs he's supposed to bowl. He was the only one player, but England mein, as we have seen, Mohammad Siraj has been effective. We have seen this last time when he played. He picked up where Bumrah couldn't pick up. So he contributed when Bumrah couldn't. So that is not like how it was in Australia. So I'm hoping कि Indian team जब select करेगी अपने bowlers को, तो they'll select the bowlers who can, chip in
when Bumrah is not his 100% during that time. But मेरे हिसाब से तो यही है कि be aggressive, because if we lose one, we win one. We win one, we lose one. It is us who will be on the back foot, not the England team. Yep. Because it's Right. their home ground, it's their play. And Yeah. since वो WTC के points हर मैच की विक्ट्री पर आते हैं, नॉट द सीरीज की विक्ट्री पे, सो आई वुड रादर होप कि इंडिया ऐसा ही अटैकिंग गेम खेले जिसमें वी ट्राई टू विन ऑल 5 गेम्स, बिकॉज वी हैव सीन अस, जब भी अपन WTC के लिए क्वालिफाई हुए हैं, वी हैव नेवर क्वालिफाइड विद अ स्वीट स्पॉट. वी हैव ऑलवेज बीन क्वालिफाइंग कि भाई ये टीम हार जाए बस किसी तरह, एंड देन वी गो इन. इस साल भी यही रहा था कि कम ऑन ऑस्ट्रेलिया हरा दे, ऑस्ट्रेलिया हरा दे. बट वी मिस्ड आउट ऑन दैट. आई वांट कि एक स्मूथ राइड हो, वी जस्ट गो इन स्मूथली. Yeah, I see. And in Australia, as you said, you said he went over the top. He bowled more overs than initially what was planned. Yeah, I think on social media हमने एक वीडियो भी देखी जहाँ पे बुमराह ऑलमोस्ट प्लीड करते दिख रहे थे रोहित को कि अब मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं करा पा रहा हूँ. So Which Yeah, is yeah. disappointed. why, which I think has probably been like a major factor to for Bumrah to consider and come to this decision कि वो पांचों टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे और तीन ही टेस्ट Yeah, मैच खेलेंगे. yeah. But again, Rajat, I don't see him playing three test matches on the trot because Possible. then you are compromising on Bumrah's quality because end of the day, Yeah, his yeah. statistics show that he is God, but end of the day, he is human, right? So uh, his efficacy, his potency will decrease significantly if he plays three test matches. By the time the third test match comes, Bumrah will be maybe half as effective as he was in the first test match. And to support this time, I think the bowling attack that we have is decent enough to Yep. sustain and do well without जसप्रीत बुमराह as well. So मैं तुम्हारा मुझे लगता है डर ऐसा है रजत कि अगर बुमराह नहीं खेलेगा इंडियन बॉलिंग अटैक बहुत ही वीक होगी. डेफिनेटली इंडियन बॉलिंग अटैक इज 50% बुमराह एंड 50% कंबाइंड ऑल पीपल. बट वो जो बुमराह का 50% जाने के बाद भी हमारे पास जो इस बार 50% है, मुझे ऐसा लगता है कि सर्ज भाई वो बहुत No, पोटेंट है. I No. don't. I'm not saying it's not potent. I've always said कि Mohammad Siraj. I have seen him when India played England last time in England. But I think in that series, Mohammad Siraj had better bowling lengths than even Jasprit Bumrah had. Because I still remember how we needed last 3 wickets with around 10 overs remaining. जिसके अंदर से आखिरी दो तो मोहम्मद सिराज के लिए हुए थे. And Bumrah had one out of those. So what I'm saying is, चल ठीक है, if he does not, since he's a human, if he even doesn't play first three, I would want him to play first three. But if he doesn't, I would rather say go for the first two, Yeah, take yeah. rest. अगर तीसरे जीतते हैं तो Right. वेल So गुड, this नहीं was जीतते my हैं गो फॉर फोर्थ. That इफ अगर yeah, फोर्थ, तो अगर थर्ड absolutely. जीतते हैं, अगर थर्ड भी जीत जाते हैं उसके बिना, देन आई डोंट थिंक ही शुड इवन प्ले फोर्थ एंड फिफ्थ. yeah. This is my answer. Because he should definitely play first two. Definitely. Like I agree he should not play the third one for sure. So if I'm looking at the schedule now, 20 to 25 is the first test. Then there is a 7 day gap. So there's enough time for Bumrah to Yeah. back again, and his quality will not be down as it was in the last test match of India Australia, and then he was just bowling for the sake of bowling because he was like more likely to get wickets. So Yeah. first, because there is enough gap, first two he should definitely play. Third one he can skip because there is only like a 3 day gap in the would third. like to would like to stop you right there because the third test match is in Lords. And do you think Bumrah will not play the Lords test match? Yeah, That is the now problem. that's So, is it in Lords? Right. okay. Yes, So the third test is in everything Lords. everything depends on if India wins the first game on first test or not. Yeah, I think so too. Yeah, but I do agree that he should play the first two test matches because if we are able to, you know, put a very good performance in the first two test Yeah. matches, First two. England's the morale of the England cricket team will go down, and from there on we can capitalize even without the presence of Bumrah. But I think We would want to play. He would want to play first you test. want to see your name on the Lords honors board. But You Yeah. want to now perform well at Lords. I want Yeah. to say this as a player, चाहे आप कितने ही सीनियर हो, चाहे आप कितने ही बढ़िया हो, मे बी योर जसप्रीत बुमराह, बट इफ यू आर गोइंग टू टेल योर नेशनल टीम कि आपसे नहीं हो पा रहा है, यू ओनली गोइंग टू प्ले 3 टेस्ट, देन यू शुडंट बी पिक पॉकेटिंग विच स्टेडियम यू वांट टू प्ले इन. समझ रहे हो? True, absolutely true. No, no, I agree, I agree. But
let's see. This will be interesting actually to see. But Watch out. Maybe Bumrah just doesn't play the first test. What if they do that? yeah, Yeah, what? No, maybe. but What if they I do that? think it would be very important for India to start on a good note. First of all, because I think the last test was in New Zealand series only that we had, or कोई और series थी इससे पहले. Australia. We played Bangladesh before New Zealand. We We beat don't. them. Bangladesh. No, I'm on YouTube. We don't yeah, consider you our competition. but uh, It's like a warm-up game for us कि कोई नहीं है, boys are getting no action in game. Let's just call Bangladesh. किसी की सेंचुरी नहीं बन रही है, बांग्लादेश को बुलाओ. uh, We- yeah. I mean, it will be interesting to see. It will be interesting to see that which test matches Bumrah plays. I agree with you. If you've already said that you will only play 3 out of 5, you can't pickpocket like pick and choose कि भाई मेरे को तो ये मैच खेलना है और मुझे वो नहीं खेलना. But I do feel that it will be like a 1-3 and maybe 4, if not Yeah, 1-3 and 5. possible. But But it all let's see. depends. अगर पहला टेस्ट जीत जाओ तो मेरी तरफ से I think Bumrah can have that flexibility that he does not want to play the second test. Absolutely, any foreign tour you start, you want to start with a victory, right? It Yeah. is going to be a very long tour. It starts on 20th June. In Yeah. fact, it has started for a few players who are in the squad who are already playing with England A. So, England Lions, sorry. And the tour goes on till 4th of August. Almost Yep. 2 महीने तक Indian team England में रहने वाली है. So yeah, that's going to be a long tour. But okay, so Jasprit Bumrah is 100% for Yes. And without a doubt. I don't think that's a surprise Look, for anybody. for the first test, he after you said that maybe he doesn't play the first test, 99%. What if there's that 1% chance? he will play. He will play. What if that First 1% chance? test he will play. I also want him to play the second test and maybe miss the Lord's test, but let's see.